Wait. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. A very good morning and welcome you all. Dear participants, till now you have attended 5 sessions of different experts. Today we have 3 sessions. First 2 sessions will be taken by Professor Anju Rawlley from NITTT Bhopal. And the last session will be taken by Professor M. Ranga. And I would like to inform you that we are keeping the good record of your response of quizzes and feedback, as well as your attendance are recording digitally. So you don't need to bother about it. Professor Anju Rawlley will take the session on outcome-based assessment and characteristics of assessment system. Over to you, ma'am. Ma'am, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you, Dr. Bedi. Uh, shall I start the session, sir? Yes, ma'am, sure. Okay, okay. Because I thought only 33 participants are here. Okay. And they will join soon, though, so you Yeah, please yeah. continue. Okay, okay. So, good morning, all the esteemed faculty of this program of CSVTU AICT joint program on curriculum implementation. Again, I am back for the session on outcome-based assessment. So, I will be touching different aspects of outcome-based assessment. Um, okay. So I think till now you had gone through the many aspects as per the schedule provided to me. Like you had the exposure on the NEP 2020, then you have the exposure on the domains of learning. Uh, okay, and then you have the exposure about the course articulation metrics, program outcomes, PEOs, PSOs, course evaluation plan, and then interpretation of the curriculum. Okay, so I think you all might have, I feel and I hope that you all might have attended all the sessions, because linking of the sessions is very, very important. Okay, because we have the sessions are kept in the way that there is a sequence, and then there are prerequisites for certain sessions. Okay. So shall I interact with you on any doubt till now? Are you clear with the domains of learning? Hem Prakash Verma sir? Hem Prakash Verma sir? Hem Prakash Verma sir? Okay, Vanshika Verma? Vanshika Verma, are you here? Anybody who can respond to the what are the domains of learning? Anybody?
Ma'am, there are three domains of learning: cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain. Very good, very good. So how they are related, madam? Very good, madam. How they are related? Ma'am, affective domain is based on theoretical knowledge, and psychomotor domain is based on practical skills, and affective domain is based on emotions, ethics. Okay, so I think There are you three missed. H: Okay, very good, head, very good. hand, and head. Okay, okay, very good. So, when we are talking about the outcome based assessment, okay, so where is the focus, madam? Because I think before understanding about the outcome based assessment, we had to be very thorough on the outcome based this domains, and we should be knowing about the course evaluation plan. We have to be thorough about the course articulation metrics and all this thing. So madam, anybody can very good, madam, thank you so much, madam Arpita, madam. Anybody can tell me uh, in outcome based assessment for assessing the outcomes, how we are focusing, in which domain we are focusing? Anybody? Anybody can tell me in which domain we are focusing for outcome based assessment? Or cognitive domain? In content based teaching, which we used to have earlier, where was the focus? In content based teaching, where we used to talk, I think I had discussed in my previous session, first session, in content based teaching learning, where we used to focus. Yes, very good. Cognitive domain, cognitive domain. Very good, very good. Thank you, thank you. Thank you for your response. So, when we are talking about psychomotor, this outcome based assessment, so what means what will be our focus? What would be our focus? Your outcomes means what? I think yesterday you had the session on the formulating outcomes. Okay. I think you are very clear on the formula outcomes at different levels. And then till now, I think you have been teaching for quite some time. Many of you must be experienced a lot also. And after this yesterday's session also by Dr. Pradhan, I think you must be well aware about how to formulate the course outcomes, isn't it? Everybody is clear about the how to formulate the course outcome. So what you have, can somebody tell me that how to assess the course outcomes, or course outcome comprise of which domain? Let me ask Suraj Panwar sir. Suraj Panwar sir. Suraj Panwar sir. My this session would be entirely interactive. Okay, maybe I will be using the PowerPoint just only for the sake of summarization. Okay, so this is because in this session I would be focusing on developing the concepts only. Okay, Suraj Panwar sir. Suraj Panwar sir. So once you have understood what are the outcomes, so where is the focus on the outcomes? Where is the focus on the outcome? Neha has, Anuradha has written, okay, just let me, Anuradha madam has written mostly to affective domain. Okay, Neha has written psychomotor and affective with cognitive. Okay, Hem Prakash Verma sir has written all the three domain. Anybody else? Very, very nice, very nice.
I think this is a platform where we can discuss and you can clear the doubt. Please don't feel shy and don't feel that what reply you will give. Okay, here we are here to clarify the doubt, to discuss the things so that you can implement that things in the right spirit. Otherwise, you will reach to the highest level of hierarchy. Okay, naturalization stage and then characterization stage, and then it becomes very difficult. Tulja Jyoti has written cognitive, psychomotor, and affective. Anybody else? Anybody else? Very nice, very nice. Srinivasan sir has written psychomotor. Okay. Srinivas sir, you have written psychomotor. I want the can you please clarify your answer, Srinivasan sir? Srinivas sir, can you please clarify your answer? Okay. Before this, I think I just wanted to ask 2-3 questions. How many of you are involved in assessment of students for summative examination? How many of you are, those who are involved in assessment of students for summative examination, please write in the chat. Okay. Okay, Deepti Randev, she is involved. Okay, only one person is involved. Okay, it looks that it means only 3 persons, Arpita Madam, Shail Raj, they are involved in summative assessment. Astha Rathore. Okay, so only few percent it seems. Only few persons are involved in summative. I asked only for summative only. Tulja Jyoti has written formative and summative. Okay. So it means you are involved in the end term in university examinations. Few of have written, Neha and so many other persons have written. I think only females are involved. Female teachers are involved in assessment of in summative assessment. Is it so? I'm getting response only from the female faculty, Dr. Srinivasan. Yes, ma'am. Okay, so you are also involved in the summative assessment. Now coming to the formative assessment, I think everyone is involved in the formative assessment. Is it so? Okay. So, yes, I think everybody is involved in the formative assessment. So I think we know that assessment is an integral part of the curriculum, and curriculum, instruction, and assessment, they all should be aligned. We have seen that in our previous session. Okay. So this is really very, very important. So as a teachers, we should understand that assessment should not be used as a tool of exploitation. Okay, that is really very, very important. First of all, this we as all teachers should understand this. Then assessment sometimes guides in instruction also. Okay, so what is to be assessed? It means we have to see that only that has to be taught. Okay, so it means assessment and instructions sometimes they are iterative, and then it is what is to be taught, it comes with the, it is aligned with the outcomes. Okay, so I think you are very clear that whatever outcomes are written, that for attainment of that outcome, we have to design the instructional strategies to achieve that outcomes. Okay, first we have to analyze that outcome, that how that outcomes is, and then based on that what instructional strategies, implementation strategies would be there. Okay, so and then what is the and then based on that you can think of assessing the students based on the means the instructional strategies, implementation strategies also
will decide that what would be the strategies of assessment, because then only you will be able to understand whether the students have understood, has attained the outcome or not. Okay, so all the three things would be aligned. Now, coming to certain basic concepts, okay, of assessment. What is process assessment? Okay, let me start with what is assessment of learning. There are three terms: assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning. Okay, there are three terms: assessment for learning, assessment of learning, and assessment as learning. Okay, so anybody can answer this? What is assessment of learning? Okay, let me start with assessment for learning. Okay, Neelam Mathur madam. Neelam Mathur madam. Neelam Mathur madam, what is assessment for learning? Are you all here in the class? Yes, ma'am. Yes, yes. Please, Neelam Mathur madam. From where you are, madam? I'm taken for Gwalior. You are from which Gwalior? Gwalior. Which college, Yeah, madam? taken for BSF Polytechnic. Huh? BSF Polytechnic. Okay, BSS College. Okay. So, madam, can you tell me what is assessment for learning? Assessment Do you for have any learning idea? means before giving any lecture, if we are trying to get how much particular is knowing Okay. and in which way he should be learned, means in which way we have to teach so that a student can understand. Okay. Okay. Okay, madam. Okay. Anybody else who can tell me what is assessment for learning? Assessment for learning. What is assessment for learning? Rajen Bhutra, sir. डॉक्टर जी राजेंद्र नमस्कार। जी जी नमस्कार नमस्कार सर। मैं सुन रहा था, असल में आज मैं थोड़ा सा इस क्लास में एक प्रयोग कर रहा था, तो आप जी बार बार कह रही थी ना कोई है कि नहीं है कि नहीं, तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसे स्टूडेंट जब हमको मिलते हैं, जब रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो हमको क्या क्या टेक्निक अपनाना चाहिए, तो वो मैं सुन रहा था। तो ये आपने जो बाय नेम वाला जो तरीका निकाला है बहुत जी अच्छा जी लगा। ओके अब आप ओके पूछ रही थैंक हैं यू सो मच। असेसमेंट फॉर लर्निंग। जी सर। तो जब हम किसी स्टूडेंट को असेस करते हैं, तो हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो दोनों स्टूडेंट में जो अंतर है, तो हम ये सीखें कि जो कमजोर बच्चा है उसको भी हम कैसे ऊपर तक लाएं। तो ये टेक्निक उसके माध्यम से हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कह सकते हैं। ओके ओके सर। में केवल स्टूडेंट को Ma'am, we can say I think let him complete, madam. Shamina madam, just wait. बोलने दीजिए। Okay, 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 okay. Thank you so much. Thank you so much, Putra sir. बोलिए बेटा, बोलिए। Shamina madam, बोलिए please. yeah, ma'am, Shamina in the madam. direction of learning or in the step of learning towards the learning. Okay, Direction okay, of learning. okay. Direction of learning. Anybody else who want to? Pavan Kumar sir. Pavan Kumar sir. Pavan Kumar Thimma Raju sir. Pavan Kumar sir. Pavan Kumar sir. Okay. Vanshika Verma. Okay. Okay, now let me start with, I will just try to explain there are certain concepts of assessment. Okay. I will start with, I would be talking about assessment of learning, assessment for learning, and then assessment as learning. Okay. Lalita Pandey, madam, process of learning. Okay. So, okay, good. First of all, I think you must be assessment for learning. It means from the word itself, it is very clear. Assessment
if we put a comma, for learning. So when we are doing assessment only for the purpose of learning, okay, so that is known as assessment for learning. Okay, so the purpose of assessment for learning means, I think I have used the term formative assessment. Okay, so formative assessment or continuous assessment, it means formative word is derived from the term formation of learning or development of the learning. Okay, development of the learning concepts. So when the students are at the stage of development of the concept, or when they are at the stage of learning, that time when they are learning, that is known as the assessment for learning. So when that time we are using the term assessment, okay, so that is known as assessment for learning. Okay, I think before this I should first of all tell you what are the three terms: the measurement, then assessment, and evaluation. Okay, these terms are very synonymously used, widely used, and sometimes unknowingly also we are using all the three terms interchangeably. Okay, so anybody knows about what is evaluation, what is measurement, what is assessment? How can you differentiate between the three terms? Anybody can tell me? Can somebody differentiate between the three terms which are very commonly we are using in our teaching learning? Anybody? Okay. When measurement, from the measurement word only. Okay, measurement means from the word measurement itself, it is very clear. It means we are trying to measure the learning of the student. That is why it is known as the measurement of learning. And when we are talking about the measurement, it is quantitative. Okay, so how many percentage you have got and how many marks are there, so that is the measurement, means it is mostly in the quantitative terms. Okay, when we are talking about the using the term assessment, means assessment term is when we are trying to fix a value, and it means when we are talking about the worth of learning, when it is used in terms of the context of students learning, so it is known as the assessment. Okay, so normally the assessment word is used in the context of students learning and what worth of learning they have attained, that is known as the assessment. Okay, then evaluation is beyond assessment. Okay, so when based on the evaluation you can say it is a long process over the period of time when you assess students on a certain points, and maybe at the end you just try to evaluate, and then based on the evaluation you try to fix, say something, you are taking certain decision, you are taking certain judgments, and that is known as the evaluation. Okay, so based on the evaluation we are taking certain decisions and we are taking certain judgments. So it is the evaluation is word, it's not only in the context of the students learning. In the context of the students learning, mostly we are using the term assessment. Okay, so evaluation, it is a very broad term, and it can be used in the context of suppose we take a project from DST, from AICT, from UGC, and then at the interim also we have to submit the report. Okay, so the interim reports also we are submitting, so that is means continuously we are submitting the reports, and so we are continuously have to submit the reports what really we have done. So at the end we have to submit the end report also. So based on that, the UGC, AICT, or maybe the sponsoring agency will try to evaluate the worth of the project.
Okay, whether suppose you had been allotted a project of 10 lakhs or 10 crores or whatever it is. Okay, so whether that providing 10 lakhs of rupees to that particular individual or the PI or the coordinator was worth or not, whether how much it has impact on the society, how much the society was benefited by that, or something like this. Okay, so that is known as the evaluation. So based on that, the committee will decide whether or sometimes you could not spend the project money. Okay, or maybe you have used or spent, I would use the word spent, you have spent all the money, but you have just used for creating the infrastructure, no impact was there. Okay, so evaluation can be based on many parameters. So based on that, whether the evaluation committee will decide whether the budget, the funds which were provided to a particular polytechnic or that, whether the impact was there or not. Like AICT has provided funds to the CSVTU, so maybe they may conduct some study, impact study on the implementation, whether some research study is a part of the evaluations. They can conduct impact study, they can conduct the tracer study. Okay, so that is the evaluation. Okay, based on that, certain decisions can be taken. I take directly for an example from the teaching learning situation. Like in first semester, if I take an example of the first semester, in first semester, students are very much afraid of the mathematics. Okay, so maybe we found that in the summative examination, I am taking the example of the summative assessment. So at the first semester, the principal have found that only 30% of students have scored more than 80% of marks. Okay, so it means what? It means why? And it's not only this year. Okay, in the second semester, in the second year also, and even in the third year also, it was observed that mostly 30 to 40% of students are scoring more than 80% of marks in the mathematics, and the dropout rate is too high. Okay, so then the management, the teachers are very concerned about the situation, and then they are trying to analyze the situation. So when they have analyzed, they found maybe the curriculum is very heavy. Okay, maybe the curriculum is too heavy. The linkages, as we were talking about in the first session, about the linkages of the content as per the school education and maybe the engineering or the polytechnic, that the linkages were not proper and the learning gaps were not properly addressed by the faculty. Okay, that can be one reason. There is a certain problem in the teaching learning by the teachers. The second reason may be the curriculum was too heavy, and then the students are not able to cope up the requirement of at their level. And then the third is the teachers are not trained on the topics, many topics which have been kept in the curriculum. Okay, so there means there was no teacher training program for updation of the latest content which has been added in the curriculum in the form of content beyond syllabus as per the requirement of the curricular gap. Okay, as per the latest requirement of the world of work, some content was added, but no training program was conducted. And because of that, it was not really transferred to the students. And then the gap is, that's why the gap is there. So if we try to analyze the situation, then maybe in your polytechnic, in your college, the situation was that teacher training program was done, but there, in spite of in one institution, teachers have taught it very nicely,
They have contributed very significantly, very effectively, very efficiently. But the learning gaps at the start of the semester were not taken care of. Okay, so that may be the situation. Okay, so in another institution, the teachers were not trained. So maybe as a measure, we have to, the management has to conduct in one institute, they had to conduct the teacher training program for that updated content. Okay. And then in another institution, the learning gaps, when you start the session right at the first semester, learning gaps are required to be addressed, maybe by certain remedial sessions or some extra classes. Okay, so it means you are trying to evaluate the situation, and based on that you have taken certain decision. So that is known as the evaluation. Is it clear to everyone? Is it clear what is evaluation? So based on the evaluation, we are taking certain decisions and we are taking certain judgment. Okay. So some value judgment is taken. So these are the three terms I think I have explained briefly. I'm not going in the definitions. We are not really interested in the learning the definitions of all these terms, but we have to understand the essence of these terms. Okay. So I think this is clear. This must be clear. If somebody is having any doubt, they can raise their hands. Okay. Then coming to, shall I move forward? Shall I move forward? Okay. Then coming to the assessment for learning, then assessment of learning, and then assessment as learning. Okay. So as I told you right now, okay, one situation was that students were not able to grasp what the teacher is teaching in the class, in spite of her or his lot of efforts and putting everything very efficiently and effectively, because what was happened, the learning gaps, okay, that were not identified, because when you start certain session, so you had to identify the gaps, because 10th means students are coming from different background. Okay, so the learning gaps has to be identified. So when you start, so when there is another term, as I would say, this is known as the, when you are trying to start or assessing a student before the start of the session. Okay, so that is known as the diagnostic teaching learning. Okay, that is known as the diagnostic teaching learning. I would request Mr. Tripathi, Rishikesh Tripathi sir, please mute your mic. Okay, so that is known as the diagnostic teaching learning. Okay, so diagnostic assessment, diagnostic teaching learning. Okay, that is before the start of the session. Okay, so you want every student to come at a approximately similar level, so that you can build the session accordingly. Okay, so that was the purpose of the diagnostic teaching learning or diagnostic assessment. Okay, then assessment for learning means assessment which is used for the purpose of learning, that is also known as the formative assessment. As I said, that is being done during the development of the learning concept. Okay, during the development of the learning concept means it can be in the, so it would be in which domain? It would be in which domain, sir? When I am talking about the development of the learning concept, so it would be in which domain? It can be in the any domain. It can be in the any domain, not only the cognitive. Why we are talking only in the cognitive? Everybody is replying only the cognitive. Why it is only cognitive? It may be psychomotor also. It can be affective also.
Okay, so when you are at the stage of learning, we have to shift, we have to really change our mindset from cognitive to, because this cognitive, psychomotor, and affective domain, that is only for us to understand. Okay, and whenever we are talking about the outcomes, it can be, and it is almost in all the situation, it may be a combination of the three. Okay, so like as I think madam might have told you, Chanchal madam might have told you that these domains, there is no distinct boundaries of separation between the cognitive, psychomotor, and affective. Is it clear to you or not? There is no separate boundaries of distinct boundaries between the cognitive, psychomotor, and affective. है क्या ये boundaries? I think this really we need to understand very carefully. Anwar sir, Anwar Sheikh sir, can you please reply this question? Do you think there are distinct boundaries of separation amongst the cognitive, psychomotor, and affective domain? When you are driving, हाँ जी बोलिए अनवर सर बोलिए. What was the question? What is the what was the question? Do you think there are, I think you know what are the different domains, Anwar sir? Yeah. Anwar sir, you know what are the different domains? Yeah, yes, sir. Cognitive domain, psychomotor domain, and affective domain. Yeah, no, I'm not asking, sir. I'm not asking because what I'm just trying to build the session, talking about the assessment. So I'm just asking you, that is there any distinct boundaries of separation amongst the cognitive, psychomotor, and affective domain? My question is this. Anybody can reply to me? हाँ अनवर सर बोलिए. I think there may be some differences. There must be, or what do you think, sir? I am asking your opinion, sir. There is differences. There are differences, but is there any distinct boundaries? Suppose you have to perform a practical. Okay, so which domain would be predominantly will be there? Initially, it involves the cognitive domain first of all. That will be applied initially. Then your practical whatever. Okay. I think. Arun sir has said, okay, I will just, Deepti madam has said, no madam, there are no boundaries between domains. Okay, there can be always overlap between the domains. Okay, this as a teacher, we really need to understand this. Okay, we cannot have the compartmentalization amongst the domain. Okay, there would be focus on the one domain. As Arun Devangan has written, there may be dominance of any domain. Okay, when you are performing the practicals, there would be dominance of the psychomotor domain, definitely. Okay, but cognitive and affective domain will also be there. Okay, but the psychoaffective domain will also be there. Srinivasan sir is saying cognitive, psychomotor are okay with maximum written part is difficult. What do you mean by this, sir? Cognitive, psychomotor are okay with maximum. What do you mean by this, sir? Srinivasan sir, can you explain this? Himlata madam is saying no difference. Neha Agarwal, no strict boundaries. There is no separate distinct boundary. Excuse me, ma'am. नो डिफरेंसेस का मतलब भी कहना यही था मैम कि यहाँ पे हम लोग जब भी क्लासेस वगैरह लेते हैं तो बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं उसमें कोई एक डोमेन हो सकता है कि हावी होता हो, मतलब ज्यादा प्रभावी हो, पर उसमें कॉम्बिनेशन है, उनका मेंटल स्टेटस भी उसमें रहता है, साइकोमोटर भी रहता है और साथ में कॉग्निटिव भी चलता है मैम. वेरी गुड. सो दैट इज रियली वी नीड टू अंडरस्टैंड.
these domains are just only for us to, as a teachers, we need to understand. Okay, so this is for us to understand. We don't have to impart all this knowledge to the students. Okay, this domain is there and all this thing. Okay, but I think when we are, suppose we are performing practicals. Okay, so while performing practicals also, we can perform the practicals only when we have certain knowledge. Okay, and then only we can perform the practicals, and then we should also have the attitude of performing. Okay, I may be knowing everything. Okay, I may be, suppose I am a gold medalist. Okay, and I am a gold medalist. I have a patent. I have so many papers, so many international. I had been visited many countries. So many. My profile is very good. Okay, any XYZ. Okay, but when it comes to the teaching, learning to the students of your college, okay, that time we are not taking interest. Okay, so it means your affected domain. So maybe you are competent, you are gold medalist, you are the topper of your institution, you have the competence, everything, but attitude, affective domain is very important. You may be knowing, but you don't want to impart because you are busy in developing your profile. It's not bad, it's not, there is nothing wrong in developing your profile, but whatever task is given to you, that we have to do. Okay, we have to see that the students are learning. Okay, so here the affective domain will also play an important role. Okay, so it's not only that if you are having a 98% marks, 90% marks, it means you will perform very well. It's not like this. Okay, so it means you got 90% marks, so it means it's not that your affected domain should also be very good. That's why I was talking about that day, that industry persons want a person who are good to very good in their performance. So they want the holistic personality, means they should have the good attitude also, positive attitude also, and they should have a practical hand also, and they should have the knowledge also. Okay, so because the industry persons feels that I can train a person when he will join the any industry. Maybe I can train on a particular equipment, maybe after 1 month of training, okay, and practice. But it would be a difficult for me to change the attitude of a person in just 1 month by a training of 1 month. Okay, so that's why inculcating values in the students right from the day one the student has entered in your institution is really your job. Okay, definitely it is a job of the parents. That's why the curriculum, it is said, the curriculum of a student start of a child, I would say a child, start from the day one it is born, even in the womb of the mother. Okay, so it means it's not the responsibility of the teacher, it's the responsibility of the parents. And then holistic personality cannot be developed only by the teachers. It is the joint responsibility of many persons, friends, anybody. Okay, so it means, so theoretical part would be there and affective domain part would be there. So I think you have understood this. So sometimes when we talk about the outcome, it can be a combination of all the three domains. Okay, got the point? Okay, so so diagnostic teaching. So diagnostic teaching learnings we have to do before the start of the session. That is really very one important thing. We have talked about the diagnostic teaching learning, diagnostic assessment. Okay, so you may have different strategy during different times. Okay, and then when we are talking about assessment for learning, so every time your presence during assessment for learning, your presence is really very important at each and every stage of learning. You should not miss a single step of the student. Okay, so you will have to develop a peer group. Okay, maybe with the students also you will have to develop the trainers. Okay, a single teacher assessing 60 students is not really possible.
Okay, you have to train your lab technician, lab staff, and some students rotation wise or something like this. Maybe you develop your video programs. Video programs means suppose you have list of experiments. So maybe as a master trainer, as a model example, you can prepare a video. No, I don't think that there should be a big media department or something like this, but a simple mobile recording will also serve. And by seeing your perfect demonstration as a model example, they would try to repeat that so that they would not perform any mistake. Got the point? Okay, so assessment for learning means, because every time you are giving the feedback, you are giving the feedback for the purpose of improvement. Okay, here the purpose of giving feedback is to improve the learning, so that there is no, you are not attaining any wrong outcome or wrong skill, and you are not reaching to the stage of skill development or at the highest stage. Highest stage means, in case of cognitive, what is the highest level? In case of cognitive domain, what is the highest level? Anybody can say? Create. Okay. And in the psychomotor? In the psychomotor? देखिए अभी ये जो नमस्कार मैडम, मैं ये कह रहा था कि ये हमारे जो मैडम अंजू मैडम ये बहुत अच्छा कर रही हैं, कम से कम के आप लोगों को इंटरेक्टिव सेशन के रूप में बना रही हैं, और रियली बहुत वंडरफुल है कि इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट है वो इंटरेक्ट करें। तो मैं मैडम का धन्यवाद बोलना चाहूंगा। मैडम मैं यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ, डॉक्टर आर.एन. खरे। जी सर, जी सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। मैं यहाँ आई थिंक पार्टिसिपेंट्स है। जी सर, मैं लेकिन बहुत अभी मैं आई विल अप्रिशिएट ऑल द पार्टिसिपेंट्स सर, दे आर इंटरेक्टिंग वेरी नाइसली, and so we are also enjoying in this way. Okay, so Thank you, because PowerPoint I will be sharing and I will be using only for summarization purpose. एक्चुअली मैडम ये आईसीटी जो प्रोग्राम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि 1.5 आवर में 1 आवर लेक्चर सेशन रहेगा और हाफ आवर कम से कम मिनिमम आपका इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। तो ये अच्छा है। इसलिए हाँ जी सर, इसलिए मैंने फर्स्ट डे भी कोशिश करी थी, तो अभी मुझे लगा कि अब तो 1 या 2 दिन हो गए हैं, तो मैं इस चीज को यूज करूं कि मेरा इंटरेक्टिव ही रहेगा। फिर मैं डेफिनेटली पावर पॉइंट को, कभी कभी क्या होता है सर, कुछ टीचर्स को लगता है कि पावर पॉइंट नहीं दिखाया, तो इसलिए मैं पावर पॉइंट पे दिखा दूंगी। मैंने अच्छा है मैडम, आप प्लीज कंटिन्यू करिए, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। जी 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 सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। And I am enjoying because the participants are really interacting. Very nice. Thank you all the participants. Okay. So, so when we are talking about the cognitive, it is the creation stage. When we are talking about the psychomotor, it is the naturalization stage. Okay. So naturalization stage means, can somebody give me the example? Can somebody give me the example if we are not doing the assessment for learning, then what would happen in case of psychomotor skill development? Can somebody give me the example? Deepak Kumar Borkar sir, can somebody give me the example? If, again I am repeating the question, if can you take one example, if what will happen if we are not doing the formative assessment or assessment for learning, then what would be the case in case of skill development in psychomotor domain? Okay, that is my question. Can you just relate it? Can you just answer me? Can somebody answer me? Please reply. You can open, you can unmute yourself and then reply me. मैडम जी प्रश्न एक बार फिर से हिंदी में पूछिएगा। जी 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 सर बूत्रा सर, यदि हम सर बूत्रा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि हम जैसे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल कराते हैं, है ना, हम प्रैक्टिकल कराते समय, मैंने ये बोला कि यदि प्रैक्टिकल कराते समय यदि हम जो ये वाला कंसेप्ट में, मैं आपको कुछ कंसेप्ट डेवलप करने की बात कर रही थी, तो मैं अभी अपन किस कंसेप्ट में थे? असेसमेंट फॉर लर्निंग में।
ओके, सो असेसमेंट फॉर लर्निंग आप समझ गए। असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स असेसमेंट हम किसके लिए कर रहे हैं? लर्निंग के पर्पस के लिए। असेसमेंट फॉर मतलब पर्पस, फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द असेसमेंट फॉर लर्निंग। यदि हम साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं या कुछ हम प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कुछ भी आपका कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फील्ड में सैम्पलिंग हो सकती है, कुछ लेथ मशीन का कुछ भी ऑपरेशन वर्कशॉप में काम कर सकते हैं। उस टाइम यदि हम स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेशन दिया हमने कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद यदि हमने उसका असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं किया है ना, इस कंसेप्ट को हमने अप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा? मेरा क्वेश्चन ये है सर। ठीक है भूतड़ा सर, आप समझ गए मेरा क्वेश्चन? जी जी जी। अब मैं आपको हमारे कोर्स के उदाहरण से थोड़ा सा इसको क्लियर करूंगा। हाँ, मैं बाकी लोगों को बता दूं, हमारे कोर्स का नाम है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। जी सर, और मैं बिल्कुल याद आ गया मुझे भूतड़ा सर, जी थैंक याद यू आ सो गया, मच। अपन ने काम किया है साथ में। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। बाकी लोगों के लिए इसका जो एक बेसिक स्किल्स है हमारे यहाँ टाइपिंग का, मतलब जो हम बनाते हैं बच्चों को ऑफिस के लिए तैयार करते हैं, क्लेरिकल स्टाफ तैयार करते हैं, तो टाइपिंग उनकी एक मुख्य स्किल है। जब हम इसको सिखाते हैं तो शुरू में तो वो कीबोर्ड की तरफ देख करके टाइप करते हैं, जी जी। धीरे धीरे उनकी स्थिति ये हो जाती है कि वो रनिंग मैटर को देखते हुए बिना कीबोर्ड की तरफ देखे हुए जब टाइप करते हैं, तो उसको हम हमारा साइकोमोटर डोमेन मान के चलते हैं कि अब बच्चा बिना देखे अपने, अगर वो देख करके कर रहा है तो वो पहला डोमेन हो गया, तो उसको समझ में आया है कि कहाँ ए लिखा है कहाँ बी लिखा है। दूसरी पहला बात, डोमेन नहीं हुआ सर, वो पहला डोमेन नहीं हुआ। पहला डोमेन मतलब वो जो जानकारी मिली उसको, हमारे प्रैक्टिकल को अगर हम तीनों हिस्सों में पहला बांटेंगे, डोमेन नहीं हुआ सर, वो पहली स्टेज हुई जो हम हाँ बात पहली करते स्टेज हैं हुई सर, इसकी कि वो जो देख करके कर इमिटेशन रहा है। मैनिपुलेशन, हाँ वो स्टेज हुई, पहला डोमेन नहीं हुआ, वो शुरू की जी। स्टेज हुई वो, है ना। दूसरी बार में उसको उंगली समझ में आ जाती है कि किस उंगली से कौन सा उसको की दबाना है। वेरी और गुड थर्ड सर। स्टेज पे आकर के हम उसको देखते हैं कि वो मेटर की तरफ देखता है, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखता है और लगातार टाइप करता चला जाता है और सही टाइप होता है। तो इसको वो नेचुरलाइजेशन जो आपने बोला, स्वाभाविकरण है, मतलब वो हमारी तरफ से उस काम में आखिरी स्टेज पर आ गया है। ये हमारा इसका उदाहरण है। ये सर वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था, आपने ये अपने डोमेन के एरिया में अपने एग्जाम्पल दिया साइकोमोटर डोमेन का। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कंसेप्ट को हम इसमें, आपने जो नेचुरलाइजेशन स्टेज में गए और उसमें कैसे हम अप्लाई करेंगे? यदि हम इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करते हैं, अब मैं इसको दूसरी तरीके से कहती हूँ, यदि हम इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा? मेरा क्वेश्चन ये है। भुतड़ा सर, अब मैं दीप्ति मैडम से पूछूं? मैडम हैंड रेज कर रही हैं बहुत देर से। जी दीप्ति मैडम बोलिए। Yes, ma'am. I was also giving a practical example for naturalization. Okay. So I didn't get this question. Okay. Bhutra sir, can you reply back? जी जी जी, किस मसले पर? मैंने बोला ना, जैसे आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया साइकोमोटर डोमेन का, दे हैव रीच्ड टू द नेचुरलाइजेशन स्टेज बिकॉज नाउ दे डोंट नीड टू सी, उनको अब देखने की जरूरत नहीं है कि वो कौन सी की कहाँ पर है, वो आपसे बात भी करते जाएंगे और बहुत बढ़िया टाइप भी करते जाएंगे, बहुत अच्छी स्पीड में, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ओके, लेकिन मैंने ये बोला कि मैं कंसेप्ट की बात कर रही थी, मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाह रही थी आपको। अभी अपन किस कंसेप्ट पे बात कर रहे थे? असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। और हमने ये बोला, मैंने जो आपको 3 कंसेप्ट की बात कर रही थी, 3-4 कंसेप्ट की, डायग्नोस्टिक टीचिंग लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। तो क्या ये चारों कंसेप्ट जो मैं बात कर रही थी, क्या ये हम केवल साइकोमोटर डोमेन या अफेक्टिव डोमेन या कॉग्निटिव डोमेन केवल एक में ही अप्लाई नहीं करते हैं, हम ये सभी डोमेन में अप्लाई करते हैं? एक तो ये हमको पहली बात समझने की जरूरत है ना। तो क्योंकि मैंने एक ही बता दिया कि डोमेन ऐसा आइसोलेशन में नहीं है, ये कहीं ना कहीं ओवरलैप होते हैं। जब ये ओवरलैप होते हैं तो फिर हमारा, जब बहुत ब्रॉडली हम बोलते हैं तो वो हमारा आउटकम्स हमेशा हायर लेवल पे होते हैं, है ना, क्योंकि आउटकम्स कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्किल्स। ओके,
छोटी छोटी चीजों की स्किल्स हो सकती है। तो आपने बोला नेचुरलाइजेशन स्टेज में आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, तो मैंने ये बोला कि असेसमेंट फॉर लर्निंग इस कंसेप्ट को यदि हम यूज नहीं करते हैं, है ना, भूतड़ा साहब मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ, यदि हम इस कंसेप्ट को यूज नहीं करते हैं क्लास में, इसका मतलब है कि हम उसको कंटिन्यूअसली फीडबैक नहीं देते हैं, तो क्या होगा कि आपने भी बोला था कि वो उंगली कैसे रखना है और उंगली कैसे पहचानना है, या किस तरीके से फिंगर्स का मूवमेंट होना चाहिए और वो किस तरीके से टाइप करता है, हो सकता है उसमें वो कुछ मिस्टेक कर रहा हो, है ना। तो आप यदि आपका एज ए एक्सपीरियंस टीचर, आप यदि उसको उस स्टेज में, है ना, यदि हम उसको फीडबैक नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि वो आफ्टर 10 साल या 20 साल भी वो अच्छी टाइपिंग कर रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है वो कुछ कमिट कर रहा हो, मिस्टेक, है ना। तो इसलिए हमको असेसमेंट फॉर लर्निंग की जरूरत है। यदि हम उसको उसी टाइम फीडबैक नहीं देते हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो गलत कंसेप्ट जो उसने लर्न किया है उसी की प्रैक्टिस करता जा रहा है, उसी की प्रैक्टिस, क्योंकि आप तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं ना, आप प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस, आप वो उसी की जो उसने गलत स्किल डेवलप करी, क्योंकि आपने का फीडबैक उसको नहीं मिला, है ना, उसने सोचा कि मैंने तो सही चीज कर ली है, तो गलत फीडबैक, आपका सही फीडबैक नहीं मिला, तो जो गलत स्किल उसने डेवलप कर ली और उसी में वो प्रैक्टिस करता जा रहा है, तो उस गलत स्किल में वो नेचुरलाइजेशन स्टेज में पहुंच जाएगा, है ना, टोकना है ना। जरूरी है, टोकना पड़ेगा। तो हमको उसलिए क्या होगा, तो उस पे ना पहुंचे गलत, जैसे कि मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दिया था कि यदि हम साइकोमोटर डोमेन में ही यदि हम एक स्कूटर ड्राइविंग का एग्जांपल लेते हैं, तो स्कूटर ड्राइविंग में हमें बता दिया किसी ने कि दिस इज द क्लच, दिस इज द ब्रेक एंड दिस इज द एक्सीलेटर एंड ऑल दिस थिंग, है ना। तो इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन एंड देन आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। तो पहले तो हो सकता है मैं बहुत प्लेन रोड में चलाऊं, अकेले बैठ के चलाऊं, कोई यदि पीछे बैठे तो मैं बोलूंगी हिलो नहीं, दोनों साइड पैर करके बैठो और इस तरीके से बैठो, है ना, तो आप मूवमेंट मत करो, मैं ज्यादा लोड ले जाके नहीं, ज्यादा सामान लेके ड्राइव नहीं कर सकती, प्लेन रोड में ही मैं कंफर्टेबली चला पाऊं। और यदि स्क्वायर आता तो मुझे गियर चेंज करने के लिए देखना पड़ेगा, हो सकता है, क्योंकि बिकॉज आई एम द बिगिनर, आई एम एट द स्टेज ऑफ लर्निंग, ओके। लेकिन धीरे धीरे जब मैं प्रैक्टिस करती जा रही हूँ, है ना, और धीरे धीरे मेरे शुरू में तो मैं जब स्कूटर को स्टार्ट करती हूँ तो हमेशा बंद हो जाता है एकदम झटके से, इसका मतलब कि मेरा सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है ना। सो आई विल गेट द फीडबैक फ्रॉम माय टीचर कि हमको किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन करना है और किस तरीके से करना है, हमको स्टार्ट करना है ना। सो एवरी टाइम मे बी 3-4 टाइम्स मैंने जैसे स्टार्ट किया मेरा स्कूटर बंद हो रहा है, but at the बाद में after practicing and giving the feedback by my trainer, है ना, by master trainer, I got the feedback and I am able to drive, है ना। सो पहले तो मैं हो सकता है प्लेन रोड में चलाऊं, बाद में मैं पीछे भी बैठा के 2 लोगों को पीछे बैठा के, आगे एक छोटे बच्चे को भी खड़ा करके, एंड देन श्यामला हिल्स में या लाल घाटी या पहाड़ी मंदिर कहीं पर भी स्कूटर ड्राइव कर सकती हूँ। इट मीन्स आई हैव रीच्ड टू द नेचुरलाइजेशन स्टेज एंड आई एम ड्राइविंग वेरी कंफर्टेबली, ओके। बट यदि आपने बहुत लोगों को देखा होगा, मे बी आफ्टर 30 years और मे बी 25 years, 40 years, they are driving but they are not driving correctly, okay. They can say I have never met an accident, क्योंकि वो हमेशा क्लच दबा के चला रहे हैं, but that is not the right procedure, okay. Accident नहीं हुआ, that is not the indicator that you are driving right, you are driving correctly, okay. आप, so if you are if the feedback is given, right feedback would have been given, then वो हमेशा क्लच दबा के नहीं चलाता। यदि हर वक्त हम क्लच दबा के गाड़ी चलाते हैं तो हमारी पेट्रोल की इफिशिएंसी घट जाती है और वो दैट इज नॉट द राइट प्रोसीजर, ओके। और वो हम चला रहे हैं, बहुत 30 साल से हम ऐसे चला रहे हैं, बिकॉज आई वाज नॉट गिवन द फीडबैक बाय माय मास्टर ट्रेनर, okay. So that is the appreciation of the assessment of learning. I think you might have appreciated the concept of the assessment for learning. Now is it okay, assessment for learning? जी सर, जी मैडम, आप आगे, बिल्कुल ठीक है। इसको टोकना है काम करते समय, अगर वो गलती कर रहा है
तो उसी टोकना समय इज नॉट द राइट वर्ड सर, टोकना इज नॉट द राइट वर्ड। सिखाना है कि भाई ये गलत कर रहे हो, इसको ठीक करो। सही है, इसलिए मिस नहीं होना चाहिए कि हमने जो बताया उसके बाद मिस नहीं होना चाहिए, कैसे कर रहे हैं वो राइट, हमको इंश्योर करना होगा। एंड इट इसका इज नॉट मूल ये है कि जब बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा हो तो टीचर कंटिन्यूस उसको ऑब्जर्व करे। यस, बिल्कुल कितनी बार ऑब्जर्व हमने क्या करे होता है, थोड़ा सा एंड देन उसको मिस हो फीडबैक जाता दे, है ना। है। एंड इसका पर्पस क्या है कि उसकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट होगा। जी, ओके, बहुत बढ़िया। और इट इज नॉट द केस ओनली इन द साइकोमोटर डोमेन, केवल साइकोमोटर डोमेन में नहीं है। यदि हम इस कंसेप्ट को हम यदि अभी हम कॉग्निटिव में पहुंचे, हम यदि कॉग्निटिव में हम टेस्ट लेते जाते हैं बच्चों के, टेस्ट 1 टेस्ट 2, है ना, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे एनईपी में कंटिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की बात हो रही है बहुत ज्यादा, है ना। हम बार बार फोकस कर रहे हैं और आउटकम बेस्ड असेसमेंट में, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, आउटकम बेस्ड टीचिंग लर्निंग में हम ये बार बार फोकस कर रहे हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट पे या असेसमेंट फॉर लर्निंग में फोकस होना चाहिए, तभी आउटकम अटेन होंगे। हम बार बार बोल रहे हैं राइट फ्रॉम द डे 1 बाय एवरी टीचर। ओके सर। जी, तो यदि हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो हमने टेस्ट तो बहुत सारे प्लान किए हैं, 3, क्योंकि हमको जो रिजल्ट है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमने टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 3-4 टेस्ट प्लान किए हैं। और हमने टेस्ट को प्लान, आई थिंक एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द इन द मिक्स्ड लैंग्वेज। आई डोंट थिंक एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम। Okay. So in cognitive domain also we sometimes we plan 2-3 tests. Okay, so if I have administered test 1, एक टेस्ट हमने दे दिया, उसके बाद हमने क्या किया, उस टेस्ट का रिजल्ट आ गया। ओके, देन उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट 2 लिया, टेस्ट का 1 का रिजल्ट आ गया। मैंने देखा कि मेरे यहाँ 60 बच्चों में से मे बी कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। मेरे 50% स्टूडेंट ने 80% स्कोर किया, 50% ने 20% तो फेल हो गए, और जो बचे 30% थे उनके भी 40% से कभी नंबर आए हैं। ओके, सो क्यों हुआ ऐसे? उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैंने सेकंड टेस्ट ले लिया बिकॉज इट वाज प्लान्ड इन दिस मंथ ओनली। ओके, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं पढ़ाती जा रही हूँ अपना, और मैंने सेकंड टेस्ट भी ले लिया। फिर मैंने सेकंड टेस्ट में इसी टाइप का कुछ ट्रेंड देखा। ओके, देन मैंने थर्ड टेस्ट ले लिया। ओके, बिकॉज मुझे तो अपने डायरेक्टर या प्रिंसिपल को हमें अपनी स्कीम सबमिट करनी है कि आपने क्या पढ़ाया, आपने टेस्ट लिए कि नहीं, बट दैट इज नॉट द पर्पस। Okay, so the same concept is applied in the cognitive domain also. Cognitive domains means जहाँ focus cognitive domain का means theory portion का, जब theory sessions लेते हैं। ओके, जब थ्योरी सेशंस की बात करें, थ्योरी सेशंस डज नॉट मीन कभी कभी हम प्रैक्टिकल भी क्लास में ले सकते हैं, स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशंस, बल्कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए आउटकम अटेनमेंट इज अवर फोकस। सो आउटकम अटेनमेंट हमारा फोकस है। सो हमें थिंग्स ऐसे प्लान करनी है, थ्योरी प्रैक्टिकल सेशंस को तो हमें कोई थ्योरी प्रैक्टिकल सेशन की बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें तो आउटकम अटेन करना है, हम कहीं भी अटेन करें। अब उसके लिए मुझे मोस्टली प्रैक्टिकल कराना है, और थ्योरी जितनी मिनिमम जरूरत है हमको उतनी पढ़ाने की जरूरत है। Okay, so theory sessions may not be given too much of weightage. हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल में समझाते हैं, उस थ्योरी को भी हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल में ही पढ़ाते हैं ना। ओके, और थ्योरी उतनी ही होनी चाहिए आउटकम अटेनमेंट के लिए, नॉट टू मच एज बीइंग डन इन द कन्वेंशनल सिस्टम। ओके, सो वो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर इफ वी आर नॉट गिविंग द फीडबैक अगेन, okay, again same concept, if we are not giving the feedback after test 1, okay, test 1 आया, उसका रिजल्ट देखा, at a glance हमको पूरी कॉपीज पहले स्कैन करनी चाहिए। where is the problem? We as a teacher need to identify where is the learning gap. Maybe there is some problem in my teaching learning. Okay, maybe there is certain problem in the levels of the students. जो learning gap आया, उस learning gap को यदि हम क्लास में एड्रेस नहीं कर रहे हैं, यदि हम क्लास में एड्रेस ही नहीं कर रहे और उसके बिना हम सेकंड टेस्ट ले रहे हैं, so I think there is no meaning in taking the second test. Okay, so unless you address you give the copies to all the students, their answer sheets, explain, discuss this test. Maybe you take 1 or 2 sessions, but discuss each and every point in the test. Why you have scored, X student have scored 10 marks, Y student have got this marks and this marks and this mark.
So learning gaps हमको class में address करने की जरूरत है. When they have we have ensured that they have learned all this thing, okay, then only we should take the test too. Otherwise, there is no point. It means we are doing the formality only. Okay, just because it is the task, we as a teacher has to take 2 tests. That's why I'm taking 2 tests. Okay, I have to take 3 tests. That's why I'm taking 3 tests. Got the point? So this concept is applicable in all the 3 domains. Okay, again I am saying domains are overlapping. Similarly, affective domain. एक बच्चे ने एक गलती करी, एक बार झूठ बोला. If you're not stopping the person at that time only, he will keep on. That becomes his habit, and it will reach to the which stage? It will reach to which stage? Affective domain की last stage क्या है? Characterization. क्या है last stage? Characterization. Okay. So it means he will reach to the, उसकी character बन गया कि वो तो झूठी बोलता है. आप किसी एक्स पर्सन के बारे में बोलेंगे कि जैसे भूतरा जी के बारे में मुझे मालूम है कि ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, टू द पॉइंट, आपको बोलना ही है. ओके, सो इट मीन्स आपको कितना भी प्रेशर हो, यू विल स्पीक ट्रुथ. ओके, ऑनेस्टी, वो ऐसा कर ही नहीं सकता. सो इट बिकम्स योर कैरेक्टर, it becomes your inherent character. We recognize the person in by tagging certain characteristic like this. Okay, so I think assessment of for learning is okay with you. Is it clear? This concept is clear. Assessment for learning. It is very important concept which is really required for outcome attainment. Otherwise, it is impossible to attain the outcomes. Okay, this is not just a formality by the teachers. ओके, हमें टेस्ट पूरे लेने हैं, हमें प्रैक्टिकल टेस्ट का भी हमको 2-3 टेस्ट लेने, तो हमने प्रैक्टिकल टेस्ट ले लिया. नहीं, इस तरीके से यदि हमारे, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि हमने एक बिल्डिंग का यदि फर्स्ट ईंट यदि हमने ब्लॉक को ठीक नहीं किया, अब सेकंड रखते जा रहे हैं, उसके बाद कंसेप्ट बिल्ड करते जा रहे हैं, और आपका फर्स्ट कंसेप्ट ही यदि क्लियर नहीं है, तो आई डोंट थिंक वो आगे के जो हायर लेवल के कंसेप्ट इस सेमेस्टर में और अगले सेमेस्टर में देन ही विल फेस प्रॉब्लम. ओके, so you will have to involve students, you will have to motivate a student, you will have to be with the students, you will have to take care of their needs, you will have to take care of their psychological needs, then only you can attain that. Okay, आपका काम only teacher का पढ़ाना नहीं बचा है. You are a counselor, you are a motivator, you are a means whatever. Okay, so this is really very, very important. Coming to the next concept, assessment of learning. What is assessment of learning? Deepti madam, I think you wanted to say something. You have raised hand. Deepti madam. Okay. Okay. What is assessment of learning? What is assessment of learning? Anybody can tell me what is assessment of learning? Poonam madam, Poonam Namdev madam. Poonam Namdev madam. पूनम नामदेव मैडम लॉग करके चले जाते हैं कैसे ओके मैम. ओके, प्रतीक्षा गुप्ता मैडम. प्रतीक्षा गुप्ता जी जी. प्रतीक्षा गुप्ता मैडम, assessment of learning में प्रतीक्षा गुप्ता. Assessment of learning to give them marks. Okay, assessment of outcome. Arun Devan sir, very good sir. To give them marks on the basis of their learning. Of their internal learning. assessment, or that may be a external assessment. Okay, okay. Ajay sir. Okay, Yes, sir. From you are from where, sir? Ma'am, I myself from Government Polytechnic College, Raisen, Madhya Pradesh.
Okay, government political action. Okay, sir. Summative assessment. I think formative assessment. I have just tried to diagnose that word. It is means it was during formation of the learning or the development of the concept. Okay, from the word. I think if you will remember the words correctly, you will never forget. Okay, assessment for learning. It means it is formative assessment. Clear? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Coming to the assessment, summative assessment or assessment of learning. Of learning means when we are talking about, or it is also known as a summative assessment. Okay, summative assessment. Sum means at the end. Okay, at the end means when we are talking about the end term examination. Okay, at the end means when maybe after a certain period of time. Okay, so it is not exactly, madam, assessment after learning. As Neelam madam is saying, means after learning the continuous process है. ओके, इट कैन बी इन द फॉर्मेटिव स्टेज ऑल्सो. तो जब हम एक स्टेज के बाद है ना, हमने कंटिन्यूसली एक सेमेस्टर में हमने 3-4 टेस्ट लिए, सब किया, लास्ट में एक ऐसा पीरियड आएगा एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सेमेस्टर, कि जब हमको अब सोचना है कि हमको अब जो उसने जो भी कंसेप्ट लर्न किए हैं, हम उसका अब एक इंटीग्रेटेड टेस्ट लेंगे. ओके, इट इज नॉट टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट, सबका मिला के जितने भी कंसेप्ट उसने लर्न किए उसका हम एक इंटीग्रेटेड टेस्ट लेंगे. दैट इज नोन एज द summative assessment at the end of the semester. It can be end of a week. It is a contextual term. It can be end of the week also, है ना. मेरे इस प्रोग्राम में ये एक वीक में आपका एक अचीवमेंट टेस्ट प्लान किया है ना. खरे सर और बेदी सर वगैरह ने आपके लिए एक अचीवमेंट टेस्ट प्लान किया. क्यों? कि जो डिफरेंट कंसेप्ट डिफरेंट सेशंस के बाद या कुछ सेशंस के बाद आपको क्विज दी जा रही है, दैट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट. और एट द एंड ऑफ दिस वीक दैट इज अ समेटिव असेसमेंट फॉर यू. ओके, लेकिन ये कंटेक्चुअली हम वीक की बात कर रहे हैं, है ना. इसके बेसिस पे हम किसी को टैग नहीं करना चाहिए. दैट इज माय ओपिनियन. Okay, so summative assessment means assessment of learning means when it is done after a certain period of time at the end of the semester, at the end of a week, or maybe a fortnightly, or maybe a year. Okay, so that is known as the summative assessment. And what is the purpose of this summative assessment? Shell Raj has said assessment of levels of learning at the end of the course. Okay, मैं अभी लेवल्स की बात नहीं कर पाऊंगी, इतनी जल्दी नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि हम तो अभी बेसिक कंसेप्ट्स को समझने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. तो हम यदि लेवल वाइज जाएंगे तो हम अभी थोड़ी और उलझन में फंस जाएंगे. ओके, तो अभी लेवल ठीक है, लेवल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स को इतने लेवल के हिसाब से अभी एटलीस्ट ना करें. हम ये कोशिश करें कि एप्लीकेशन अबव एंड लेवल हो. ठीक है ना, एकदम नॉलेज लेवल के क्वेश्चन ना हो, अरे रिमेंबर लेवल के क्वेश्चंस ना हो. वो होंगे लेकिन वो इनिशियल स्टेज में होंगे. धीरे धीरे हमको ट्रेन करना पड़ेगा उनको कि हम हायर लेवल के क्वेश्चंस वो कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको स्टूडेंट्स को तो वर्ल्ड ऑफ वर्क में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, जहां पे टास्क ही होगा. ओके, जो विच कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ, it may be an integrated problem of many concepts. Okay, so summative assessment means, I think it is clear. Summative assessment, what is the purpose? My question was, what is the purpose of the summative assessment? I think little bit I have touched in class 1 also. Okay, on Sunday Neha Thakur has written to check whether learning outcomes are achieved or not. Okay, anybody? Very good, Neelam madam, Neha Thakur madam. Anybody else wants to say? Okay, so the purpose is, हम केवल लर्निंग की बात कर रहे हैं. ओके, ठीक है, लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि हम कोई स्टूडेंट हमारा हाउ मच दे अंडरस्टूड. ओके, हाउ मच दे अंडरस्टैंड. Okay, that process we are already checking during the formative assessment. Okay, Neha Thakur, to check whether learning outcomes are achieved or not. This Neha Thakur madam, this we can do even at the formative assessment. Okay, how much they understand. Okay, so summative assessment, the purpose is certification. ओके, हमने एक स्टूडेंट को हम केवल लर्निंग की बात करते जा रहे हैं, लेकिन हमको ये भी देखना है, हमको उसको प्रमोट भी करना है. वी हैव टू प्रमोट दैट स्टूडेंट ऑल्सो,
maybe from 12th class, first semester to second semester, second to third. Okay, so हमने जितनी learning कराने थे हमने formative assessment के and diagnostic learning, diagnostic teaching, and then formative assessment, assessment for learning. During that time we have already taken care of all these things. हम अब उसको एक problem देके हम at the end we are just taking a integrated assessment in the form of summative assessment by combining all the course, okay, or maybe whatever is there. Okay, so it means, so when the assessment is doing at the end, okay, of the semester, end of the session, whatever it is known as the summative assessment, and it is also known as the assessment of learning. Okay, and the purpose is certification. The purpose is certification. Okay, key you have got, now you can be promoted because you are excellent in all the outcomes which is really planned for this particular semester. You are excellent in this. Okay, or maybe you are very good or good, whatever it is. Okay, I will come to that later on. Okay, so it means you have attained, so that is a summative assessment. Got the point? Is it clear? The purpose is certification. Clear? Now coming to the third point, third concept. Okay, I will add this third concept is assessment as learning. What is assessment as learning? Anybody can tell me what is assessment as learning? What is assessment as learning? Anybody? Anybody has heard this term, assessment as learning? Very important concept, very important concept. Anybody know? Hello. हाँ जी. Good morning, ma'am. Good morning, sir. बोलिए. Ma'am, assessment as learning में मुझे लगता है कि assessment is not only contributing of how much learn, but it is also contributing towards learning also. तो assessment सिर्फ assessment नहीं कर रहा है, उसमें learn भी कर रहा है साथ assess करते हुए. मतलब हमें टेस्ट दे रहे हैं ना, खाली टेस्ट में ये नहीं पता चल रहा है कि कितने हमने लर्न किया, बट टेस्ट देना भी एक काइंड ऑफ इटसेल्फ इज अ लर्निंग. That is what I understood by assessment as learning. जी सर, पीयूष जी सर. I think assessment as learning means, देखिए learning की जो हम बात कर रहे हैं, learning will be there in assessment for learning. और हमारे बस देखिए समेटिव और फॉर्मेटिव में फर्क क्या है? बिकॉज फॉर्मेटिव में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग द फीडबैक, सो स्टूडेंट इज गेटिंग द फीडबैक दैट हियर यू कैन इम्प्रूव. ओके, बट समेटिव में देयर इज नो स्कोप ऑफ द फीडबैक. Got the point? Summative में हम at the end कर रहे हैं, you don't have the scope, means this, even the students, from the student point of view also, वहाँ पर हमको student के पास भी scope नहीं बचा अब कि मेरे को यदि मेरे को कि scope ये दे दिया जाए कि मेरे इतने कम नंबर क्यों आए हैं. आपको feedback का कोई scope नहीं है summative assessment में भी, इसलिए वो एक terminal assessment टाइप का हो गया. ठीक है, तो एक तो इसीलिए यदि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत अच्छा है, इफ यू एज ए टीचर, इफ हम बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से और हम उसको हर स्टेप पे उसकी चेक एंड चीजें कर रहे हैं, चेक करना नॉट इन द फॉर्म ऑफ असेसमेंट. Okay, हम just to improvement के point of view से, then you will find that definitely the learning will be occurred. Okay, यदि हमारे formative में learning बहुत अच्छी तरह हो रही है, definitely your summative assessment असेसमेंट बहुत अच्छा है, तो हमारे स्टूडेंट्स एंड सेमेस्टर समेटिव असेसमेंट एंड टर्म का रिजल्ट खराब आएगा ही नहीं. that is for sure. अभी मैडम ये 360 डिग्री फीडबैक जो चल रहा है ना, वो इसी कंसेप्ट पे चल रहा है. 360 डिग्री फीडबैक के मतलब वो कंप्लीटली जो है सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, सेल्फ स्टूडेंट लोग. बिल्कुल मैं उसी पे आ रही हूँ सर. जी सर. हाँ जी पीयूष जी. So assessment as learning. Okay, I think we know that जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में भी कहा था कि हमें POs हमारे हर टीचर के माइंड में एम्बेडेड होना चाहिए. POs, COs,
है ना. COs means it is a reflection of that course, है ना. और what are the aims of the technical education means from the engineering and polytechnic point of view. वो difference हमारे mind में एकदम ये बिल्कुल must है, otherwise ये आप start नहीं कर सकते teaching. अब हमने देखा one of the POs is lifelong learning and self assessment, learning to learn. Okay, so assessment as learning means we are focusing on the self assessment. Okay, so self assessment को हमको एनकरेज करना है, सेल्फ लर्निंग को एनकरेज करना है. और इस टाइप की, इसलिए मैंने फर्स्ट सेशन में भी कहा था, आई थिंक यू माइट हैव पिक्ड इट आल्सो, कि हमें वी नीड टू डू द करिकुलम एनालिसिस, वी नीड टू ब्रेक अप आवर कोर्सेस और कंटेंट एंड आइडेंटिफाई वेयर आर व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट वेरी माइलस्टोन कांसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, रियली ओनली दैट नीड टू बी एड्रेस्ड. ओके, और हमको रेस्ट ऑफ द सेशंस हमको कहीं में भी हम एज ए टीचर बहुत अच्छे सेल्फ लर्निंग मटेरियल बना लें, हैंडआउट्स बनाएं बहुत अच्छे कुछ वीडियो एक्टिविटीज बना लें, अपने कुछ वीडियो प्रोग्राम्स बना लें हम 5-5 मिनट के. ओके, मूक में तो ये कंसेप्ट बहुत आया है. ओके, क्योंकि अभी जैसे हम अपने एक एक्रेडिटेशन के मूव में भी हम इन्वॉल्व हैं, आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व. अभी एक हायर मॉड्यूल्स बने हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें इवन आई हैव कंट्रीब्यूटेड इन दैट ऑल्सो. सो काफी सारी चीजें हैं. तो आप ये देखेंगे कि यदि हम दिस हैबिट हैज टू बी डेवलप. When the students will go to the world of work, no teacher will be there, no parents will be there to guide कि ये वाला स्किल तो आप बोलेंगे कि स्टूडेंट ने कहीं डेवलप, स्टूडेंट सोचेगा मैंने कहीं डेवलप ही नहीं किया, ना मुझे इस कोर्स में पढ़ाया ना इस कोर्स में पढ़ाया. सो अल्टीमेटली that task will come. Okay, it may be from a one program means discipline, or it may be a cross section of many program. Okay, so that's why we have to develop a self learning or self assessment habit. Okay, so assessment as learning means हमको लर्निंग की भी हैबिट डालनी पड़ेगी, एंड वी एज अ टीचर शुड, वी एज अ स्टूडेंट शुड डेवलप द हैबिट ऑफ असेसिंग अवर सेल्फ. सो सेल्फ असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स सेल्फ असेसमेंट. ओके, इस कंसेप्ट में जब मैं रूब्रिक पढ़ाऊंगी तब मैं आपको और थोड़ा डिटेल में करूंगी. आई थिंक अभी इसको मैं ज्यादा एड्रेस नहीं कर पाऊंगी. जब आप रूब्रिक में थोड़ा सा जब कंसेप्ट लूंगी, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी different sessions of different industrial training and project and all this thing. but यदि मैं concept आप समझ जाएंगे rubric का, तो I think आप किसी भी चीज में अप्लाई कर पाएंगे. चाहे यहाँ पे 2-3 सेशंस लिए गए हैं, different context लिए गए हैं, I would say, but you can take for your admission cell, maybe for your admission, for your examination, for designing the question paper, for evaluating a question paper, for everything there can be a separate rubric. Even for all your each and every experiment also you can think of designing the rubric. Okay, so assessment as learning means we are promoting on the self assessment. Okay, so we should give enough opportunity to the students for assessing, for self assessment. I think these 3 concepts are clear, sir. Everybody is clear about all these concepts. So can I move forward? हाँ, बेदी सर कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं मैडम. Okay, sir. So now coming to the, I think these concepts actually may be clear to you. Now coming to another concept, process assessment. Okay, there are 2 more terms, process assessment and product assessment. Okay, what do you mean by the process assessment? What do you mean by the process assessment? अर्पिता मैडम, अर्पिता वैष्णव मैडम. मैम, प्रोसेस असेसमेंट में जैसे कि हम साइकोमोटर डोमेन का एग्जांपल अगर लेते हैं, तो बच्चे अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने प्रॉपरली कनेक्ट किया है नहीं वायर, मतलब हर स्टेज में उनको हम असेस कर रहे हैं, वो उनका प्रोसेस असेसमेंट हुआ. प्रोडक्ट असेसमेंट में मैम वो जो लास्ट प्रोडक्ट जो हमको सिमुलेट करके दिखाएंगे या जो भी वेब फॉर्म जनरेट करके दिखाएंगे, वो हमारा लास्ट प्रोडक्ट असेसमेंट होगा. तो आप कैसे करती है मैडम? मैम हम लोग इसी टाइप से असेस करते हैं मैम. एक्चुअली मैम आपसे मैंने लैब मैनुअल वाला एक सेशन हम भोपाल में हुआ था,
वो मैंने लैब मैनुअल डेवलपमेंट का किया था, उसमें हम लोगों ने असेसमेंट के तरीके ये सीखे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। आई जिसको थिंक मैं यू आर अप्लाई करती प्रैक्टिसिंग हूँ। दिस, दैट इज यस रियली मैम। वेरी गुड। ओके, तो मैडम जैसे आपने बोला कि प्रोसेस मतलब वो कर रहे हैं और प्रोडक्ट मतलब कि वो जो उसका आउटपुट है ना? तो जी मैम। क्या मैडम आप तो वेटेज किस पे जाता है आपका? मैम प्रोसेस पे ज्यादा वेट जाता है मैम, प्रोडक्ट क्योंकि प्रोसेस अगर सही होगा तो प्रोडक्ट तो सही निकलेगा ही। ओके, और यदि प्रोडक्ट बाई चांस सही नहीं निकला, है ना, तो मैम सही उसमें नहीं, वेटेज कम है मैम, वेटेज कम देते हैं। जैसे अगर 25 नंबर का टोटल है तो हम 15 नंबर लगभग इसमें देते हैं और 10 नंबर लास्ट में देते हैं प्रोडक्ट में। ओके, देखिए ये नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई थिंक, थैंक यू अर्पिता मैडम, आई थिंक यू हैड वेरी थैंक यू। एक्सप्लेन वेरी नाइसली। I think process means it is the same the term which we are using, the formative assessment and the summative assessment. Okay, but these terms process and product assessment are used in the context of normally when in the context of practical experimentation. Okay, कि आप वर्कशॉप में प्रैक्टिस काम कर रहे हैं या प्रैक्टिकल्स का काम कर रहे हैं, तो आप उसमें हम प्रोसेस एंड प्रोडक्ट असेसमेंट की बात करते हैं। प्रोसेस असेसमेंट मीन्स when the student is performing during performance, when we are assessing the students during performance, that is known as the process assessment. Okay, or product assessment means when we are performing assessing the students at the end, not at the end, means assessing the students independent of him or her. Okay, so it means process assessment is done in presence of the student. Got the point? Okay, process assessment is done in front of the student. ओके, कि आपने ये किया, ये कैसे किया, ये एक्सपेरिमेंट है, यदि इसमें हम ये वाली एक्सेसरी निकाल दें या इस सैंपल की जगह हम दूसरा सैंपल ले लें तो क्या होगा, है ना, और यदि हम वोल्टेज बढ़ा दें तो आपका क्या होगा करंट, इस टाइप के आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सारे प्रोसेस मींस वी हैव टू प्रिपेयर our student on all these things. So process assessment is during performance when the student is assessed. Okay, so that is known as the process assessment. Okay, तो ये हम assessment की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने learning उसकी करा दी ना, हमने assessment for learning, formative assessment हमने किया ना, जब हमने उसको feedback भी देते गए और हमने assess करते गए. Got the point? Okay, so for process assessment is that, and then it has to be done in presence of the student. But product assessment, it is done independent of the student. आपने स्टूडेंट कर लिया, उसके बाद हमने उसने जो एक्सपेरिमेंट का राइट अप लिखा वो हमने उसके इंडिपेंडेंट कर लिया मतलब उसके एब्सेंस में करा हमने। ओके, वहां पे हमको जब प्रोडक्ट असेसमेंट करते हैं उस टाइम हमको स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। ओके, इट कैन बी डन आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो हम लेकिन बट it is very important, very important point that what are the different criteria, okay, which we are fixing for that particular task or experiment, for that particular in the process and the product. कभी कभी हम अपने इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर हमने प्रोडक्ट में हमने लिखा कि रिजल्ट यदि उसका 2.5 आना चाहिए, तो यदि 2.55 भी आ गया यदि उसका या 2.59 आ गया तो हमने उसके नंबर काट लिए। Like this kind of assessment should not be done. ओके, हमने एक स्टूडेंट के लैब मैनुअल यदि उसने जो लैब रिपोर्ट जो उसके जो बुक बोलते हैं, आप क्या जो भी बोलते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, मुझे लैब रिपोर्ट बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, जो आपने किसी बच्चे ने लैब रिपोर्ट पूरी कंप्लीट करी है तो आप उसको एंड सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर दे देते हैं, जो जिसके नंबर एंड सेमेस्टर में होने ही नहीं चाहिए, मैं बोलती हूँ। ओके, ये तो कंटिन्यूअस काम है ना। एक बच्चा बहुत गंदी राइटिंग लिखता है लेकिन ही इज द ओरिजिनल राइटर। ओके, उसका बहुत कैजुअल अप्रोच है लिखने की, बट ही इज द ओरिजिनल वन। एक मेरी राइटिंग मान लो बहुत अच्छी है, मैंने उससे कॉपी की और बहुत अच्छा डेकोरेट करके कर लिया, तो आप एज ए टीचर सोचेंगे कि उसने कितना अच्छा बनाया, जो ओरिजिनल राइटर है बेचारे उसको तो बहुत कम नंबर दे दिया आपने।
Got the point? So these are the things which we need to assess during formative assessment. इसलिए फाइनल एग्जामिनेशन में हमारे लैब रिपोर्ट के कोई काम नहीं, नंबर नहीं होने चाहिए, यहीं पर तो वेरिएशन हो जाता है. Got the point? So हमें इंडिकेटर्स, मेरा मेन पॉइंट ये है, what should be the criteria for process assessment and what should be the criteria for product assessment that should be very meticulously designed. और ये एक टीचर का काम नहीं है ये. ओके, आप ड्राफ्ट बना लीजिए, बट इट नीड्स लॉट ऑफ डिस्कशन. ओके, सो दैट जो हमारा असेसमेंट है वो सही हो, हमारा असेसमेंट लर्निंग की तरफ हो, हमारा असेसमेंट आउटकम अटेनमेंट की तरफ हो. आपने देखा हो कुछ बच्चे 90% ला रहे हैं, 98% ला रहे हैं, उनकी डेप्थ इतनी अच्छी नहीं है. ओके, बट many students who are only 60-70% achiever, but they are very good in skills or many things. Okay, तो कि हमको कहीं इनकी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप करने की जरूरत है. टू द पॉइंट हमको क्वेश्चंस हमको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्वेश्चंस और सब बनवाने के लिए. आई थिंक somebody will be taking the sessions, the question also. I will not be talking that much on this. So I think this is clear. So I think process assessment and then product assessment, that should be the indicators for the process and product assessment, that should be meticulously designed. Okay, so I think the concepts which I have explained, I think, is it clear? Shall I have to stop here only, or can I take 10 minutes more just for summarization? Or maybe after at 12 I have to start? As you wish. Okay. If the participants are ready, otherwise shall I break and then can we come at 11:45? 11:45. After 12. Okay, sir. Okay, thank you. Okay, I will summarize this at 12 o'clock. I think it would be better because I think you are tired, it seems. So, मैडम, मैंने NITTR का नाम बहुत सुना था, लेकिन पहली बार मुझे इतनी खुशी हो रही है, मतलब कि कितना बेहतरीन तरीके से आप इंटरेक्ट कर रही हैं. हमारे बड़े भाई साहब NITTR में प्रोफेसर हैं, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं. कौन से? खरे साहब, कौशल किशोर खरे, के खरे. तो हमारे ब्रदर थे, कजिन ब्रदर, वहाँ प्रोफेसर थे. तो अभी मैं देख रहा हूँ कि रियल में आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और बधाई बेदी साहब को के रियली जो एक्सपर्ट और रिसोर्स पर्सन है, उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को रखा है. नहीं सर, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह प्लान किया है. ओके सर, थैंक यू सो मच. पार्टिसिपेंट भी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वगैरह जो इतने तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं. पीयूष लोटिया जी. जी. थैंक यू सो मच. So we come at sharp 12 o'clock. Okay, thank you so much. Thank you. Yes, ma'am. So I will summarize at that time with the help of PowerPoint. Okay, thank you, ma'am. Thank you for the session. The lecture was very interactive and participants were also involved. I hope a participant enjoyed and learned the different characteristics of assessment. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Dear participants, there is a break for 30 minutes. The next session will be start at 12 p.m. Professor Rawlley will take the next session, and the feedback form is already shared in the chat box. It is request you submit it positively. We will meet again at 12 p.m. Thank you. Sir, one query was there. जी सर. सर, ये जो कल CO को हम लोग को सबमिट करने बोला गया था, वो कौन से मेल में भेजना है सर? सर, क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? जी बोलिए सर. सर, जो हम लोग को मेल करना था सर CO का, वो कौन से मेल आईडी में भेजना है सर? कल प्रधान सर ने कहा था सर. ये चैट बॉक्स में डाल रहे हैं. जी. अच्छा, बिल्कुल. ये चैट बॉक्स में सर आप वहां से ले लीजिएगा. थैंक यू सर, थैंक यू लॉट. जी.